Hello children, let's learn how to find LCM of two or more numbers. There are different methods to find LCM of two or more numbers. Those are listing multiples method, prime factorization method, short division method. Let's discuss one by one. Listing multiples method, first one. Okay, so let's do by one example. Find LCM of 3 and 5. And this method you do like how you find out the HCF by listing method. First you have to find the multiples of the given numbers, then find their common multiples, then find their least common multiples. So first multiples of 3 are 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 27, 30, 33, etc. Multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, etc. Okay, and you know how to find multiples by multiplying the given numbers by 1, 2, 3 and so on. This you know. Then find the common multiples of 3 and 5. You see the multiples list. See the circle numbers here. 15 is a common multiple, 30 is a common multiples, and there are so many other common multiples also because the lists are infinite. Then common multiples of 3 and 5 are 15, 30 and so on. Then LCM of 3 and 5 means least common multiple. That means the smallest common multiple. So let's see. Here see 15, 30 and so on. Which is smallest here? 15 is smallest. That means 15 is the LCM of 3 and 5. Okay. Then prime factorization method. Yes, prime factorization is also not new for you. You know how to do prime factorization. Then let's do by one example. Find LCM of 24, 36 and 40. So you know how to find out the prime factorization. How you find out prime factorization when you find HCF by prime factorization method. So first step is similar. First you have to find their prime factorization, and prime factorization you know you can do it by two methods. Any method you like, you use that factor tree method or up to down division method. Which you like, you do that. Here I have done by up to down division method. So see this also you know, so do prime factorization, and here you see 24 equal to 2 into 2 into 2 into 3, 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3, then 40 equal to 2 into 2 into 2 into 5. Then how to find out their LCM? Let's see. In HCF what to do? You have to find their common prime factors, then you multiply them to find the HCF. But for LCM what to do? Let's see. First you write their prime factorization here. Here let's see. 24 prime factorization is 2 into 2 into 2 into 3. Then 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3. Then 40 equal to 2 into 2 into 2 into 5. First step. This is first step. Okay. Do the prime factorization. Okay. Then what to do? You see all the prime factorization of the given numbers. Here 24 prime factorization, 36 prime factorization, 40 prime factorization. Then you see what are the prime factors here. What are the prime factors? You can see 2, 3 and 5 here. 2, 3 and 5. Now children, you have to see what is the maximum times these factors occur in here. Okay, जो ये फैक्टर्स है 2, 3, 5 कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे है प्राइम फैक्टराइजेशन पे, तो ये फैक्टर सबसे ज़्यादा बार कितने बार आया है यहाँ? यू कैन सी इन एनी प्राइम फैक्टर. सो सबसे देखो फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 बार आया है, सेकेंड फैक्टराइजेशन में 2 बार आया है, थर्ड फैक्टराइजेशन में 3 बार आया है. तो मैक्सिमम टाइम्स क्या हुआ? 3 टाइम्स ईयर.
यस, फर्स्ट और थर्ड में. सो 2 मैक्सिमम 3 टाइम्स ओके. देन 3 फर्स्ट फैक्टराइजेशन में 1, सेकेंड फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स एंड इन थर्ड फैक्टराइजेशन 0 टाइम्स. 3 है ही नहीं. दैट मीन्स द मैक्सिमम टाइम occurs is 2 times. So 3 is 2 times. Okay. And 5 in first and second factorization no factor 5, and in third factorization 5 is maximum 1 time. So here maximum 1 time occur. That means our LCM is what to do? You have to multiply this factor with their maximum times. So 2 occurs 3 times. So this is 2. You multiply 2 3 times. Then multiply with them 3 factors with their maximum time occurrence. 2 times 3 into 3. Then 5 1 time. Their multiplication. So 2 3 times, 3 2 times, and 5 1 time. You multiply these numbers. Okay. So its multiplication value is 360. This is the LCM. Okay. It is very easy. First do prime factorization, then see all the factors and their maximum occurrence, then multiply those prime factors with their maximum occurrence, multiply them and you get the LCM. Okay beta. Then in this prime factorization method it can be done like this also. Same 24 prime factorization are 2 into 2 into 2 into 3, and 36 equal to 2 into 2 into 3 into 3. Then 40 equal to 2 into 2 into 2 into 5. So first you have to see the common factors of all these prime factorization. Common prime factor. Here see 2 is common. Then again another 2 is also common. Then you see no common for all these prime factorization. Then what to do? Then you see common factor in 2 prime factorization. Okay. So here for in first and second 3 is common. Then I circle these common factors. Then see the second and third factorization. There are no other common factors in these 2. Then you see the first and third. Here 2 and 2 are common. जो लेफ्ट बच गया है उनमें. ओके. देन यू सी नो अदर कॉमन फैक्टर्स. ओके. अभी क्या करना है? टू फाइंड LCM you have to multiply the common factors in 3s in 2s factorization. Okay. And the uncommon factors which left. जो कॉमन है यहाँ पे देख रहे हो, पहले तीनों में कॉमन हम लाइन खींचे हैं, अंडरलाइन किए हैं. देन दो में कॉमन के लिए सर्किल बनाए हैं. और जो बच गए फैक्टर्स अनकॉमन जो रह गए तीनों में या दोनों में, सबको मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल दिस 3 आर 2. देन मल्टीप्लाई अगेन 2. देन दोनों में कॉमन जो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. देन दोनों में कॉमन 2. उसके बाद जो बच गए कौन अनकॉमन फैक्टर जो है 3 and 5, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो. सो यू कैन सी इन बोथ द मेथड. हियर यू कैन गेट 1 2 3 times 2. Here also 3 times 2. Then 3 2 times, 3 2 times. Then 5 1 time. Here 5 1 time. So multiplication value same 360. अगर 4 नंबर है तो पहले तीनों नंबर चारों के फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है देखोगे. फिर उसके बाद 3 नंबर का फैक्टराइजेशन देखोगे, उनमें कुछ कॉमन तो नहीं है. फिर 2 नंबर्स का फैक्टराइजेशन में देखोगे कॉमन कुछ है कि नहीं. फिर उन सब का मल्टीप्लिकेशन विद देयर अनकॉमन फैक्टर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो LCM निकले. सो ये दोनों मेथड आप ये भी यूज कर सकते हो, ये मेथड भी यूज कर सकते हो. हाँ, बट आई थिंक दिस वन आपके लिए आइए पहला वाला आप फैक्टराइजेशन कर दिए, फैक्टर्स देखोगे और वो हाईएस्ट टाइम कितना बार ऑकर कर रहे हैं उन फैक्टराइजेशन में, कितने हाईएस्ट टाइम्स कितने बार है उन सबको मल्टीप्लाई करोगे. ओके. देन लास्ट वन इज शॉर्ट डिवीजन मेथड.
short division method is very popular because it saves our time. Okay beta, so let's see here by one example. Find LCM of 4, 6, 8. And this is similarly like your HCF. How you find out HCF? By common division method, like that. Here also, but there is slight difference. In HCF you take the prime factors of all these three numbers, but here to find LCM we have to take we can take prime factor, common prime factor for at least two numbers. Okay, so let's see. Here our numbers are 4, 6 and 8. First, what to do? You have to write those numbers by putting comma in a horizontal line. 4, 6 and 8 horizontal line में. फिर आपका वो जो लाइन खींचोगे ऐसे. यस, देन अभी जो कॉमन फैक्टर लेना है वो एटलीस्ट 2 नंबर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर्स का. ओके, तो हियर यू सी बेटा 2, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 इज फैक्टर ऑफ ऑल दिस 3 नंबर. सो पहले हम 2 लेंगे. 2 2 जा 4. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कोसेंट होगा, तो 2 कोसेंट को उसके नीचे लिखेंगे. देन 2 3 जा कोसेंट 3 को 6 के नीचे. 2 4 जा 8, सो 4 कोसेंट को 8 के नीचे लिखेंगे. ओके, देन नेक्स्ट इज अगेन पुट द लाइन. देन अगेन यू सी, इज देयर एनी कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दिस 3 नंबर्स? नो, तीनों का कोई कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है. सो उसके बाद देखोगे कोई 2 नंबर्स का तो नहीं है. यस है, 2 and 4 का कॉमन फैक्टर है, प्राइम फैक्टर 2 अगेन. सो वी कैन टेक 2 एंड डू डिवीजन. सो फर्स्ट नंबर को डिवाइड करो 2 से. 2 1 जा 2, कोसेंट 1 को उसके नीचे लिखोगे. देन 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो इस केस में क्या करोगे? यू हैव टू ब्रिंग डाउन 3 एज इट इज. 3 को जैसे के वैसे उसके नीचे लिख देंगे. देन 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 2 जा 4, 2 को यहाँ लिखेंगे. ओके, उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे ये जो अभी 3 नंबर आ गया, दीज आर को प्राइम्स. तो अभी स्टॉप, आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि आपको नीचे को प्राइम नंबर्स ना मिले. को प्राइम नंबर्स यू नो द नंबर्स विच है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 और देयर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. तो ये आ गया, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं है. सो हियर वी स्टॉप. देन व्हाट इज द LCM? LCM is the product of the number by which we divide these numbers and the number left, the co-prime numbers which left below. ये सबका ये दोनों नंबर और ये नीचे नंबर, ये सब नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 2 into 2 into 3 into 2. ये 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज दैट नंबर, सो 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा. सो देयर प्रोडक्ट इज 2 into 2 4 into 3 12 into 2 24. So 24 is the LCM of 4 6 8, but I do here. Okay, so this method is very popular and because it's save our time. Okay, so do practice of these methods to find LCM. Okay.